औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear second year student, after a long time I am going to upload second year lectures now along with the first year, and we will continue this till all the chapters are being finished. This is chapter 12 about current and electricity. Our today's lecture will be composed of resistors, types of resistors, a rheostat, and potential divider. प्यारे तुलबा, ये आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है। इसमें हम रेजिस्टर्स, टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स, रियोस्टेट्स और पोटेंशियल डिवाइडर्स के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस के बारे में हमने पहले पढ़ा। अब हम आते हैं रेजिस्टर्स। Resistor specially designed conductors used to control current and get desired electric potential from a fixed voltage source are called resistor. ये मखसूस तरीके से बनाए हुए कंडक्टर होते हैं जो कि सर्किट में करंट को कंट्रोल करते हैं और दिए गए वोल्टेज सोर्स से पोटेंशियल डिफरेंस को निकालते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। From the name resistors, it is clear it resists the flow of electric charge. So anything that is hinder or resisting the flow of electric charges are called resistors. हर वो चीज़ जो कि कंडक्टर में करंट की फ्लो में रुकावट बनती है उसको रेजिस्टर कहते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रेजिस्टर की तरफ कि रेजिस्टर्स के टाइप्स क्या है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स विच आर कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर, वायर वाउंडेड रेजिस्टर्स, थर्मिस्टर्स, सरफेस माउंट रेजिस्टर्स एंड फ्यूजिबल रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स के बहुत से अकसाम हैं। इनमें से कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर्स हैं जो कार्बन से बने होते हैं, सिरामिक्स। वायर वुंडेड रेजिस्टर होते हैं, तार को घुमाया जाता है, लेंथ में कमी ज़्यादा सी रेजिस्टेंस भी कम ज़्यादा होती है। थर्मिस्टर्स जो होते हैं, सरफेस माउंट रेजिस्टर्स होते हैं एंड फ्यूजिबल रेजिस्टर्स होते हैं। So these are the types of resistors which are in common use in all electronic equipments. Carbon resistors. What a carbon resistors are? Carbon resistors are mainly containing carbon or graphite as a major component. कार्बन रेजिस्टर में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो कार्बन होता है या ग्रेफाइट होता है। कार्बन रेजिस्टर्स आर द मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड कार्बन ब्लैक और ग्रेफाइट विच इज कंडक्टर एंड अ स्पेशल टाइप ऑफ क्ले एंड अ रेजन बाइंडर विच इज इंसुलेटर। कार्बन रेजिस्टर्स जो होती हैं वो क्या होती है? मिक्सचर ऑफ कार्बन ब्लैक या ग्रेफाइट जो कि कंडक्टर होता है और मखसूस किस्म की
क्ले जिसको मट्ठी आम अल्फाज में कह सकते हैं, रेजन बाइंडर जो उसको चिपकाने वाली चीज़ होती हैं, विच इज़ इंसुलेटर। जिस तरह आपके पास जो होता है ग्लू वगैरह होती हैं वो बाइंडर होते हैं, तो इसी तरह इसको बाइंड करने के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ बाइंडर इस्तेमाल होते हैं, उसको रेजन बाइंडर कहते हैं। सो कार्बन रेजिस्टर्स जो होते हैं किस चीज़ से बने होते हैं, ये कार्बन ब्लैक या ग्रेफाइट से बने होते हैं, और उसके साथ उसमें स्पेशल टाइप ऑफ क्ले होती हैं जो कि रेजन बाइंडर होती हैं जो कि इंसुलेटर है। कार्बन ब्लैक ग्रेफाइट प्लेज द रोल ऑफ कंडक्टर, क्ले रेजन बाइंडर जो उसमें मिक्स की जाती हैं वो क्या होती हैं, वो इंसुलेटर्स होते हैं। These are mixed in proper proportion to get a desired resistance। ये इनको proper proportion में mix किया जाता है ताकि proper resistance को पाया। जिस तरह कंडक्टर है उसमें फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर उसमें कोई इंसुलेटिंग मटेरियल मिला दिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन की फ्लो में रुकावट आ जाती है। ये मतलब है उससे आपके पास क्या बनती है, कार्बन रेजिस्टर बनते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यानी बनावट किस तरह होती है, मैन्युफैक्चरिंग कार्बन ब्लैक, clay and resin binder are pressed and molded into rods from after being heated। कार्बन ब्लैक, क्ले, रेजन बाइंडर को प्रेस किया जाता है और उसको मोल्डेड का मतलब शेप दिया जाता है, यू उंगली की तरह या किसी और तरह शेप दिया जाता है, मोल्डेड इनटू रॉड्स, रॉड्स बना दिए जाते हैं आफ्टर बीइंग हीटेड। मतलब इधर कार्बन ब्लैक, क्ले, रेजन बाइंडर, इन तमाम को हीट किया जाता है और उसको हीट के बाद जो है एक पर्टिकुलर शेप दे देते हैं। इसको क्या कहते हैं, मोल्डिंग कहते हैं, रॉड्स की फॉर्म में बनाए जाते हैं। द रॉड्स आर कलर कोडेड टू असाइन न्यूमेरिकल वैल्यू टू इट। रॉड्स पे कलर लगे होते हैं, कलर कोडिंग होती हैं ताकि उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं असाइन किए जाए, और प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस इतना है। द न्यूमेरिकल वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय कलर कोड्स। न्यूमेरिकल वैल्यूज इज इंडिकेटेड बाय कलर कोड आइदर बाय 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। द रेंज ऑफ कार्बन रेजिस्टर इज रफली फ्रॉम 1 ohm to 20 mega ohm, from 1 ohm to 20 mega ohm. To give numerical value to resistor, colors are printed on a rod in the form of straps। इस यानी ये जो रॉड है उस पर रंग चढ़े होते हैं और उन रंगों को क्या किया जाता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है उससे फिर हम मालूम करते हैं कि ये रेजिस्टर जो कार्बन रेजिस्टर इतने का है। कार्बन रेजिस्टर स्टेबल होते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, अफेक्ट होती है। कार्बन रेजिस्टर्स जो होते हैं वो चीपर होते हैं कंपेयर टू दी वायर वुंडेड रेजिस्टर, लेकिन वायर वुंडेड रेजिस्टर ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू कार्बन रेजिस्टर्स। तो जो रॉड होता है उस पर कलर्स, डिफरेंट कलर्स प्रिंट होते हैं और हर कलर का अपना कोड होता है, और उससे फिर हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं कि ये रेजिस्टेंस कितना है। द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइंड फॉर डिफरेंट कलर्स आर एज फॉलोज। ये फैक्ट्स हैं, वर्ल्ड वाइज ये इस्तेमाल होते हैं। देखो कलर जो आपको दिए गए कि कौन सा कलर है, फिर कोड है, देखो कलर कोड, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ब्लैक के लिए 0 कोड इस्तेमाल होता है, अगर उस पर ब्लैक स्ट्रिप होता है तो उसका मतलब होता है 0। ब्राउन जब होता है तो उसके लिए क्या होता है, 1 होता है। फॉर रेड इट इज़ 2, फॉर ऑरेंज कलर इट इज़ 3, फॉर येलो कलर इट इज़ 4, for green color it is 5, for blue color it is 6, for violet color it is 7, for gray color it is 8, for white color it is 9। So that is basically ये क्रॉस जो है that is multiplication, 0 multiplied by 1, 1 multiplied by 10, 2 multiplied by 10 to the power 2, 3 multiplied by 10 to the power 3, 4 multiplied, so you do like that। 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 6, this is multiplied, 5 multiplied by 10 to the power 5, that means like that। Now tolerance, what a tolerance, gold, for gold that is plus minus 5% of tolerance, यानी यहाँ तक उसकी
बर्दाश्त है। सिल्वर की टॉलरेंस जो है दैट इज़ ±10% और 0.01 ±10%, or no color, when there is no color at the end, then that will be ±20% tolerance, meaning that if you enhance whatever resistance is, for example it is 1000, 20% of 1000, you can go beyond that 1000 up to 20% or come down to 20%, it will not be affected, यानी अगर 20% है तो इसका मतलब ये होता है कि इसको इस तरह बनाया जाता है कि ये जो 1000 लिखा होता है तो वो बड़ा सेफ होता है, तो आप 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा भी जा सकते हैं, 20% आगे भी जा सकते हैं, तो वो रजिस्टर काम करेगा। लेकिन उसके बाद जो है अगर आपने बढ़ा दिया टेम्परेचर तो वो रजिस्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो इसका ये मतलब है। यूजुअली द कोड कंसिस्ट ऑफ 4 बैंड स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये जो हम 4 बैंड्स वाला करते हैं, मुख्तलिफ बैंड्स वाले हैं। यूजुअली द कोड कंसिस्ट ऑफ 4 बैंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द कलर बैंड्स आर इंटरप्रेटेड एज फॉलोज। इसको देखो, लेफ्ट से पहला द फर्स्ट एंड सेकेंड कलर बैंड स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड इंडिकेट्स द फर्स्ट 2 डिजिट्स। यानी इन कलर्स के लिए जो जो कोड लगे होते हैं वो लगाया जाता है। जिस तरह पहला वाला ऑरेंज है तो उसके लिए 3 लगा होगा, दूसरा वाला क्या है येलो है तो उसके लिए आप 4 लगाओगे, ये मतलब है। और मल्टीप्लिकेशन का तो बाद में आ जाता है। सो द थर्ड बैंड फ्रॉम लेफ्ट एंड इज मल्टीप्लायर ऑफ द 10 विद द फर्स्ट 2 डिजिट्स, यानी ये जो है आप 3 4 मल्टीप्लाइड बाई जो बैंड आता है, थर्ड बैंड जो होता है वो मल्टीप्लायर ऑफ 10 होता है। ये जो हमने क्या मल्टीप्लायर ऑफ दिस जब आप लगा लेते हो तो उसको उससे मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना, दैट इज द मल्टीप्लायर ऑफ 10। द फोर्थ बैंड इज आइदर गोल्ड और सिल्वर और नो कलर विच गिव्स द टॉलरेंस ऑफ रजिस्टर, जिस तरह अभी हम दिखाते हैं आपको। By tolerance we mean the possible variation from the marked value। जो marked value है उससे पास है। ये देखो रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, सिल्वर है, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा जो है ये देखो पावर ऑफ 10, और चौथा ये देखो, अब ज़रा देख लो उसको। इसको हम किस तरह लिखेंगे, रेड की जगह आपने रेड का क्या कर दिया, रेड का 2 है। ये देखो जो कलर बैंड रेड के लिए है वो क्या होता है, 2 होता है। ये देखो मैंने 2 लगा दिया। फिर इसके बाद ब्लू है, ब्लू का क्या है ज़रा देख लो, ब्लू का 6 है, ये देख रहे हो 6 है, तो ये आ गया 2 6 आ गया। अच्छा जी, और ग्रीन है, ठीक है ना, इसके बाद क्या आता है, ग्रीन आता है। तो ग्रीन का क्या है ज़रा देख लो, ग्रीन 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 किधर है, ग्रीन ये है 5 है, तो 10⁵ से उसको मल्टीप्लाई करो। क्या मल्टीप्लाई करो, लास्ट वाला जो होता है मल्टीप्लायर होता है, 10⁵ से मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया विद द टॉलरेंस ऑफ ±10%। विद द टॉलरेंस ऑफ, क्यों, क्योंकि जो सिल्वर है इसका टॉलरेंस 10%। अगर गोल्ड होता तो उसकी टॉलरेंस की वैल्यू अपनी है। ये देखो गोल्ड के लिए 10, गोल्ड के लिए क्या है 5% है। और अगर नो कलर होता एंड में तो नो कलर के लिए क्या होती, फॉर नो कलर ये क्या होता जो है 20 ±20% होता। सो द फर्स्ट डिजिट IE2 is a color code for red. The second digit, that is 6, is for blue, and the third band is multiplier of 10 power n। अब आपको पता चल गया होगा क्या होता है, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट और तीसरा वाला मल्टीप्लायर होता है, जो आपने यहाँ पर देख लिए। देखो ये मल्टीप्लायर है, जो एंड में आता है ना, जो वाला एंड में आ जाता है दूसरा वो मल्टीप्लायर होता है। अगर रेड थर्ड में आता तो मल्टीप्लायर 10⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ऑरेंज थर्ड में आता, थर्ड बैंड में आता तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड 2 डिजिट, थर्ड बैंड जो है मल्टीप्लायर ऑफ 10 जो उसके लिए हैं, जो आपको ऊपर दिखा दिए गए हैं। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, एंड फोर्थ जो बैंड है वो क्या है, सिल्वर है, और सिल्वर के ±10%। तो इसका आपका रेजिस्टेंस क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस क्या होगा जो आप देखोगे, रेड ब्लू ग्रीन। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि कलर कोड आपको याद होनी चाहिए और मल्टीप्लायर भी याद होना चाहिए। तो ये देखो आप आसानी से, अगर आपके पास ये रजिस्टर हैं और आपको ये चीज़ें याद है, कलर कोड्स वगैरह याद है,
तो आप आसानी से ये रेजिस्टेंस जो है वो कर सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, ये है विद अ प्लस माइनस ऑफ 10%, विद अ प्लस माइनस. सो देर आर आल्सो सम रेजिस्टर्स with 5 bands in which the first 3 steps indicate the first 3 digits followed by decimal multiplier in the 4th step and the tolerance in the 5th step. बिल्कुल उसी तरह उसमें 4th है, 5 वाला भी हो सकता है, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं. तो बेसिकली ये आपके पास क्या है, रजिस्टर है, और इसकी परफॉर्मेंस को हीटिंग जो है वो क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं. वी आर गोइंग टू सी अ स्मार्ट शॉर्ट क्लिप of a video about the carbon resistor. ज़रा देख लो उसको. Carbon resistors. The wire-wound resistors are expensive and huge in size. Hence, carbon resistors are used. Carbon resistor consists of a ceramic core on which a thin layer of crystalline carbon is deposited. These resistors are cheaper, stable, and small in size. The resistance of a carbon resistor is indicated by the color code drawn on it. The table shows the color code for carbon resistor. A 3-color code carbon resistor is discussed here. The silver or gold ring at one end corresponds to the tolerance. It is a tolerable range, plus or minus, of the resistance. The tolerance of silver, gold, red and brown rings is 10%, 5%, 2% and 1% respectively. If there is no colored ring at this end, the tolerance is 20%. The first 2 rings at the other end of tolerance ring are significant figures of resistance in ohm. The third ring indicates the powers of 10 to be multiplied on number of zeros following the significant figure. Thank you for watching. ओके, तो आपने देख लिया कि जो पहला 3 जो स्टेप वो होते हैं, कार्बन रजिस्टर होता है, तो उसमें आपने देख लिया कि पहले 2 जो हैं आपको क्या देते हैं, वो डिजिट देते हैं कलर कोड वाले. थर्ड वाला जो है मल्टीप्लायर ऑफ 10 देता है, और चौथा वाला जो है टालर. इससे ये देखो स्टेबल हैं, लेकिन वायर वाउंडेड रजिस्टर से ज़्यादा स्टेबल नहीं है. वायर वाउंडेड रजिस्टर जो होते हैं, अब हम बाद में पढ़ेंगे, वो मोर प्रिसाइज होते हैं, वो ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं. इसकी फ़ंक्शन चूँकि ये सेमीकंडक्टर्स हैं, तो उसके फंक्शंस जो हैं ये अफेक्ट होते हैं विद द टेम्परेचर. तो आपने इसको देख लिया कि ये कार्बन वाउंडेड रजिस्टर्स जो हैं वो आपके पास क्या है. सिंपल अगर मैं इसको शार्ट कर लूँ, लेफ़्ट से स्टार्ट होता है. ये देखो, ये आपका लेफ़्ट हैंड है, तो लेफ़्ट से स्टार्ट होता है. ये देखो, रेड, ब्लू, ग्रीन, सिल्वर. रेड के लिए अपना कलर कोड है, ब्लू के लिए अपना कलर कोड है, तो यहाँ पर ये दोनों डिजिट लगेंगे. और ग्रीन के जो आए वो मल्टीप्लायर ऑफ 10 करोगे, मल्टीप्लायर ऑफ 10 करोगे, ठीक है ना. अगर 5 हैं तो ये देखो, अगर देखो ग्रीन 5 है ना, तो 10⁵ बेसिकली आप करोगे थर्ड वाला. अगर ब्लू एंड में होता, फ़र्ज़ कर थर्ड ब्लू होता, तो आप क्या करते, ये देखो ब्लू 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 ब्लू, दैट इज़ 10⁶. ब्लू के लिए 6 है, लेकिन आप 6 नहीं लगाते बल्कि 10⁶ लगाते अगर ये थर्ड पोजीशन पर होता. इसी तरह अगर रेड जो है वो थर्ड पोजीशन पर होता, तो आप क्या करते हैं, रेड के लिए 2 है तो 10⁻² से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपके पास जो 2 डिजिट आए हैं पहले वाले से. सो दिस इज़ व्हाट अ कार्बन. नाउ इट इज़ नॉट इन योर टेक्स्ट, ये आपके टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी इसलिए ताकि बाकी रेजिस्टेंस के साथ उसको क्या कर दिया जाए, कंपेयर कर दिया जाए. So that was about the carbon resistor. How does it works? And you have seen in the radios, television, such type of colored rods, and these colored rods are basically showing the resistances connected between any two terminals, between any two supplies. जो आपको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, टर्मिनल्स होते हैं. करंट जहाँ पर आप क्या करते हैं, पास होता है, तो उसके लिए प्रॉपर रेजिस्टेंस लगाया होता है ताकि करंट की मुनासिब मकदार वहाँ से पास हो जाए. तो दीज वर दी
यानी इसका यूज़ आप कहीं छुपा हुआ नहीं है। आप कंप्यूटर को खोल लो, आप रेडियो को खोल लो, आप टेलीविज़न को देख लो, तो उस पर आपको बहुत से राड नज़र आएंगे विद मल्टीपल कलर्स, जो कि कार्बन रेजिस्टर्स कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस the wire wounded resistances or wire wounded resistors. It is clear from the name, when a wire is rounded like that, that is called wounding. When a wire is spiraled on a cylinder, then it's called wounded resistors. A special type of resistive wire wrapped around an insulating core used as a current controller in a circuit is called wire wounded resistance. स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टिव वायर होता है, स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल से बना होता है, एलाइज होता है या कोई और होता है, ताकि प्रॉपर उसकी क्या होती है रेजिस्टेंस जो है वो दे सके। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टिव वायर होता है जो कि घुमाया होता है इंसुलेटिंग मटेरियल पे, और उसको इस्तेमाल किया जाता है एज ए करंट कंट्रोलर इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। करंट कंट्रोलर इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ये आपको देख रहे हैं, ये देखो, ये एंड ए है, ये बी है, और उसके दरमियान वायर को क्या कर दिया गया, ये देखो, अगर आप यहाँ पर कनेक्ट करोगे तो यहाँ से ये सारा वायर हो जाएगा, दूसरा वाला इधर कनेक्ट करोगे, ठीक है ना। एक वायर इधर कनेक्टेड है, एक इधर कनेक्टेड है, तो तार का लेंथ इधर से स्टार्ट होता है। अब इसको इधर उधर करने से जो है रेजिस्टेंस बढ़ता या घटता जाएगा, या इसको इधर लाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, जब इधर ले जाओगे तो तार की लेंथ बढ़ती जाएगी, और आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो इधर उधर करने से सी कांटेक्ट जो है ये मूवेबल है, इसको इधर उधर करने से इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाती है, और इन दो तारों के साथ जो भी चीज़ होती है, बल्ब होता है कोई होता है, उसके अंदर जो है करंट की मकदार तब्दील होती रहती हैं। इसके 3 टर्मिनल्स हैं, ए हैं, बी हैं, सी हैं, मूवेबल हैं। आपका ये यहाँ से आपका ज़ीरो रेजिस्टेंस, फिर जनाब अब जाते हैं, देखो इंक्रीज़ और यहाँ पर आ जाते हैं मैक्सिमम हो जाता है। जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है तो इधर जो आपने बल्ब वगैरह इसमें करंट जो है वो मिनिमम हो जाएगा। और इस सी को अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, टुवर्ड्स लेफ़्ट मूव करते हैं, तो आप देखिए इसमें करंट बढ़ता जाएगा, जो बल्ब है उसमें करंट बढ़ता जाएगा, बिकॉज वायर की लेंथ कम होती जा रही है, रेजिस्टेंस कम होती जा रही है, तो करंट बढ़ता जाता है। नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन। The length of the wire and specific resistivity determine the resistance of a resistor. You know, we have done that resistance is a direct function of length. So when the length is greater, resistance will be greater, and when the length is smaller, the resistance will be smaller. देखो, लेंथ और रेजिस्टेंस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर लेंथ बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, लेकिन करंट जो है वो कम होता जाएगा। So, greater the length and specific resistivity of wire, the greater will be the resistance, because R is equal to rho L divided by A. R is proportional to rho, R is proportional to L. So, if specific resistivity and length are greater, then resistance will be greater. Such resistors are usually constructed from manganese or chromium or constantine or tungsten or eureka wire because of their low temperature coefficient of resistivity. ऐसी रेजिस्टर आमतौर पर मैंगनीज, क्रोमियम, कांस्टेंटाइन और टंगस्टन और यूरिका वायर से बनाई जाती हैं, क्योंकि उनकी क्या होती हैं, लो टेम्परेचर को एफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, यानी चेंज इन रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर के साथ बहुत कम आता है। चेंज इन रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बहुत कम आता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम लो को एफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं, ताकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। सो ऐसे रेजिस्टर्स जो होते हैं किस चीज़ से बनाए जाते हैं, मैंगनीज से, मैंगनीज,
क्रोमियम, कांस्टेंटेन, टंगस्टन, यूरिका वायर्स, जिसकी अल्फा क्या होती हैं, छोटी अल्फा, डेल्टा आर बाई आर नॉट, डेल्टा टी वी हैव स्टडीड बिफोर. These resistors are highly stable and accurate over a wide range of temperature compared to carbon resistor. कार्बन रेजिस्टर्स की एफिशिएंसी टेम्परेचर के साथ इफेक्ट ज़्यादा होती हैं, लेकिन चूंकि इन रेजिस्टर्स का अल्फ़ा क्या होता है, कम होता है, यानी वायर वाउंडेड रेजिस्टर का अल्फ़ा कम होता है, तो इसलिए इसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ एप्रिशिएबली चेंज नहीं होती. इसीलिए ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एक्यूरेट होते हैं और प्रीसाइज होते हैं. नाउ लेकिन ये इसकी नुकसान क्या है, महंगे होते हैं कंपेयर टू कार्बन रेजिस्टर्स. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वायर वुंडेड रेजिस्टर. टाइप्स ऑफ वायर वुंडेड रेजिस्टर्स ये क्या है. नंबर 1, वेरिएबल वुंडेड रेजिस्टर, जिसको दूसरे अल्फाज में रियोस्टेट कहते हैं. क्या कहते हैं, रियोस्टेट. इफ़ यू गो टू द लैब you will find it in the lab for your experimental work. So rheostat, basically what we discussed now, is operating on the same function. This type of wire wounded variable resistor consists of a bare manganese wire wounded on an insulating cylinder. The ends of a wire are connected to two fixed terminals A and B, as we have shown before. This is A, this is B. So that is the total length of the wire that starts. Basically A should be here and B should be here. So but A and B as being mentioned. A third terminal, इसमें ये होता है कि दो टर्मिनल फिक्स होते हैं, ये A है, ये B है. C जो होता है वो मूवेबल टर्मिनल हैं. A terminal C is connected to a sliding contact that can be moved on the wire to increase or decrease the length of a wire between terminal A and C. ये देखो, अगर ये आपके पास A है, ये C है, तो ये वाला लेंथ काउंटेबल होगा. अगर C को इधर कर दे तो ये वाला लेंथ काउंटेबल होगा. अगर C को इधर कर दे तो ये वाला लेंथ जो है ये काउंटेबल होगा. सो C अगर A के नज़दीक है या बिल्कुल A पर है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है. अब C को आप B की तरफ मूव करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और सर्किट में करंट जो है वो कम होता जाएगी. ये आपके पास क्या है, रेजिस्टर का तरीक़ाकार है, रियोस्टेट का तरीक़ाकार है. सो टर्मिनल C is movable between A and B. So the resistance between terminal A and C varies by sliding the contact C को मूव करने से ये रेजिस्टेंस A और C के दरमियान चेंज होती है and is directly proportional to the length of the wire. You know that resistance is direct function of the length of the wire. So by moving contact C away from A will increase resistance and decrease current in the circuit. अगर C को A की तरफ आप मूव करोगे तो लेंथ ऑफ वायर बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी और करंट जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. वेयर इज मूविंग कंटेक्ट C टूवर्ड्स A, अगर A की तरफ मूव करोगे तो लेंथ ऑफ वायर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी और करंट जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. सो दैट इज the function of the rheostat. So variable wounded resistors are used as a rheostat and a potential divider. This instrument is used for controlling electrical current in the circuit. अगर आपके पास एक अपरेटस है, इसको कम करंट चाहिए और आपके पास डायरेक्ट और कोई चीज़ नहीं है कि वोल्टेज सोर्स नहीं है कि आप उससे उसको वो करंट प्रोवाइड करके दे दें, तो आप क्या कर लेते हैं, रियोस्टेट को लगा लेते हैं. और रियोस्टेट क्या करता है, उसमें कंट्रोल अमाउंट में करंट छोड़ता है. और जब कंट्रोल अमाउंट में करंट छोड़ता है तो क्या मतलब होता है, वो अपरेटस जो है वो फंक्शन करता रहता है, वो फंक्शन करता है. दैट अपरेटस इज़ फंक्शनिंग. सो रियोस्टेट का क्या है, ये देखो A और B के दरमियान ये तार कनेक्टेड है, C मूवेबल है. अगर A से B की तरफ जाते हैं, C को A से B की तरफ ले जाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट कम होता जाएगा. और उल्टा है तो उल्टा होगा, उसका एक्शन जो है उल्टा होगा.
So by moving C towards A will decrease resistance and hence increase current in the circuit. तो जिस apparatus में current ज़्यादा भेजना है तो उसमें ज़्यादा current जाएगा. A small video clip about the rheostat. Na Allah da para tasu da Google na faida wakhle. I am thankful to Google. You should be thankful to it because you are having a lot of knowledge in it. थोड़ा थोड़ा देखते जाओ, 5 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाएंगे. Let's see how a rheostat functions. जी जनाब. Of resistance wire and a tap which is movable. So how can we connect this thing up to provide a variable resistance? If you connect it this way, then these 2 points are always shorted by this thick, fat metal rod. So no matter how you move the tap, the resistance between these 2 points is always 0. As I have mentioned it to you, that if it is connected like here, if you do it this way, there, then you will always have the countable. resistance of the entire coil between these 2 points. And again, moving the tap doesn't make any difference. The correct way to do it is to make one connection at the end of the coil and the other connection at the tap. So when the tap is set here, then the currents will have to run through a large section of the coil. But if the tap is set over here, the currents will have to run through a smaller section of the coil. So there you have it, a variable resistor. You see, if that is coming, bulb is turning on because resistance Of course, you could have chosen to use the other end of the coil instead. Just make sure you have the other end connected to the tap. Yes, this is ulta. Alright, easy, right? He has reversed Bye-bye. the terminals. So now, तो ये थी आपके पास क्या कि ये रियोस्टेट जो है फंक्शन किस तरह करता है. You have seen that how a rheostat is functioning, and it was a small video clip you have seen. देखो, अगर ये वाला इधर लगा लोगे, इसका ये मतलब था, अगर ये वाला इधर लगा लोगे और ये वाला उधर लगाओगे तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा आपका लेंथ यहाँ से स्टार्ट होगा. So that was about. Now we are coming to the potential divider or variable or wounded. ये तो हो गया वायर wounded resistor तो हो गया, लेकिन अब हम आते हैं किसकी तरफ आते हैं, potential divider की तरफ. How rheostat can be used as a potential divider. So the apparatus used to get a desired electrical potential from the given voltage source is called potential divider. देखो, आपके पास 20 वोल्ट का सोर्स है और आपको कितना चाहिए, आपको 5 वोल्ट चाहिए. अब अगर 20 वोल्ट अगर आप उस बल्ब के साथ अटैच करोगे तो वो बल्ब जल जाएगा. तो उसके लिए आप क्या करो, रियोस्टेट को इंट्रोड्यूस करो, मूव करते जाओ. जिस दो पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज 5 वोल्ट हो जाए तो आप बल्ब को उन 2 पॉइंट्स के दरमियान कनेक्ट कर दो, उस बल्ब को 5 वोल्ट की वोल्टेज मिलेगी. यानी दिए गए सोर्स से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वोल्टेज हासिल करने के आले को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं. यानी दैट इज डिवाइडिंग द वोल्टेज at different points, between different points. So the apparatus used to get a desired electrical potential from a given voltage source is called potential divider. And what is the principle? Voltage is a direct function of length, like you have done in case of rheostat. Resistance is a direct function of length. So voltage is the work per unit charge, which is a direct function of length. If length is increasing, electron will have to do more work to travel, so voltage will be greater. So voltage is a direct function of length. Now come to the explanation of this one. To get a desired electrical potential from fixed potential, we use a potential divider. To get a desired electric potential from a fixed potential difference source, we use potential divider.
अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर हम किसी सोर्स से वोल्टेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम पोटेंशियल डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं। ये देखो, अ वोल्टेज सोर्स ऑफ वोल्टेज V इज़ कनेक्टेड बिटवीन एंड A एंड B। ये देखो, ये A है और ये B है और ये रेजिस्टर है और ये वोल्टेज को क्या करता है, डिवाइड, और ये वोल्ट मीटर है। क्या है? वोल्ट मीटर है। सो अ वोल्टेज सोर्स V इज़ कनेक्टेड between the ends A and B of resistor RAB, जिसका रेजिस्टेंस RAB है, जो कि फिगर में दिखा दिया गया है। A और B के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसका वो RAB है, यानी सारे ये जो रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस RAB है। ए करंट I flows in the सर्किट में करंट I फ्लो करता है। A voltmeter is connected between a fixed end A and sliding contactor C. This contact C like a rheostat, ये स्लाइडिंग है, ये क्या है? स्लाइडिंग है। ये कंटैक्ट C जो है वो क्या है? वो स्लाइडिंग है। A फिक्स है, B अपना है, A और B के दरमियान रेजिस्टर कनेक्टेड है। So the resistance of a wire between A and C is RAC. देखो, this is RAC. which is variable by moving C you can change the resistance RAC. Now we know that the potential drop across AB is VAB is equal to V is equal to IRAB. A और B के दरमियान जो potential drop है वो IRAB. So the current flowing in the circuit now will be VAB by RAB, RV divided by RAB. VAB is equal to V, so that is V divided by RAB. And the potential drop between A and C is, A और B के दरमियान potential drop ये हो गया V divided by RAB. Now potential drop between A and C is VAC is equal to IRAC. IRAC. Put the value of I from here in this equation. I की वैल्यू यहाँ पर लगाओ तो what you get, VAC is equal to VAB by RAB multiplied by RAC, RV by RAB multiplied by RAC. Now you can see VAC is equal to RAC by RAB multiplied by V. Since RAC, you see that this is smaller, RAC is smaller than RAB, so the result will be in fraction. इशारिया में जवाब आएगा। RAC, resistance between A and C, is less than resistance between RAB, so the option will be if C is at point B, then RAB by RAB, that will go 1. So what should we write? The ratio RAC by R less than or equal to 1, less than or equal to 1. इक्वल कब होगा? अगर C पॉइंट जो है वो B पर होता है तो वो इक्वल हो जाएगा RAB, तो इससे जवाब 1 आएगा। Otherwise RAC is less than RAB. When RAC is equal to RAB, then RAC by RAB is equal to 1 and VAC is equal to V. And if RAC is less than RAB, then in this case VAC will be less than V. So thus by changing RAC, we can get a desired potential from the given voltage source. The potential difference V is regarded as the input electric potential difference and VAC is the output potential difference. Output to potential difference. एक है इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा है आउटपुट पोटेंशियल। ए और बी जो है, जो वोल्टेज दी जाए, वो जो वोल्टेज देता है उसको इनपुट कहते हैं और रेजिस्टर के थ्रू हम जो अपना मतलब का निकालते हैं वो आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए से हम दिए गए सोर्स से अपनी तबीयत के मुताबिक जो है वोल्टेज हासिल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये 20 वोल्ट का सोर्स है और आपके पास यहाँ पर एक बल्ब कनेक्टेड, इसको 5 वोल्ट चाहिए, तो अगर आप उसको ए और बी के दरमियान कनेक्ट करोगे, अगर ये सारी ये 5 वोल्ट है तो ये तो 20 वोल्ट है सारा। अगर 20 वोल्ट बल्ब में डायरेक्ट आएगा तो 20 वोल्ट का क्या हो जाएगा, उससे तो जल जाएगा। अब क्या करते, रजिस्टर लगा दिया। अब रजिस्टर के दरमियान ये वोल्टेज अगर 5 वोल्ट है तो यहाँ पर वही बल्ब लगा दो, वो खुश रहेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा, उसको कुछ भी नहीं होगा।
जिस तरह डैम्स में पानी प्रॉपर अमाउंट पे छोड़ा जाता है तो उसको बर्दाश्त कर सकता है, अगर पानी प्रॉपर अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है तो वो डैम्स उसको टाला नहीं कर सकता, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता. ऑल क्लिप हाउ अ पोटेंशियल डिवाइडर works. Thanks to Google, thanks to YouTube for uploading such beautiful and attractive videos. तो देख लो कि ये किस तरह काम करता है. Hello and welcome to the 12th episode of Simply Electronics Basics. Today we're going to have a look at voltage dividers, what they do and how they work. I'm going to demonstrate this using one of the simplest setups possible. You can create a voltage divider simply using two resistors and one power source. So before we go any further, what exactly is a voltage divider? A voltage divider will allow you to divide the voltage between two resistors, and therefore allowing you to step down the voltage from a power supply to any other voltage that you require. For example, there is a 12 volt power supply powering this circuit. So what if I only have a 12 volt power source, but I only want 5 volts from the power source? Well, this is exactly what voltage dividers can do for us. By dividing the voltage between two resistors, you can adjust the resistance of each resistor to change the ratio of division across them, and therefore alter the voltage drop across each resistor. This will then allow us to make a connection across a resistor and use our desired voltage. So here's a quick demonstration just so you know exactly what I'm talking about. I have a 12 volt power source, and the first resistor, which we will call R1, is set to 1 ohm, and the same for the second resistor, it is also set at 1 ohm. So because both of these resistors are set to 1 ohm, the ratio is 1 to 1. So therefore the voltage drop across each resistor is exactly half of the supply voltage. I can confirm this by putting a voltmeter across resistor 2, which is showing 6 volts. If there is 6 volts across this resistor, then there must be 6 volts across this one, because our power supply is 12 volts. And just so you can see, resistor 1 also has 6 volts across it. Now, we've changed the resistors in this circuit, and it may become a little bit more difficult to work out the voltage across any of the resistors. For example, how do I work out what the voltage will be across this resistor if it is set to 2 ohms and this one is set to 10 ohms? Or, how do I work out what the voltage will be across this resistor? Well, thank God for equations, because there is a really simple equation that will allow us to work out the voltage across any resistor connected in a series circuit. The equation goes like this: V equals V total over R total times R. This simply means the voltage across any resistor is equal to the total voltage in the circuit, which is the voltage of our power supply, divided by the total resistance in the circuit. In this case, it is 2 ohms plus 10 ohms, which is 12 ohms. And then we times that result by the resistance of the resistor from which we are calculating the voltage drop. So if I want to work out what the voltage drop will be across resistor 1, I would simply do this. The voltage across this resistor will be equal to 12 volts divided by 12 ohms times 2 ohms. This gives me the result of 2 volts. So to confirm this, let's connect a voltmeter across the resistor and see what the voltage is. As you can see, the voltage across this resistor is 2 volts. I know the total voltage in the circuit is 12 volts. If resistor 1 is dropping 2 volts, then resistor 2 must be dropping 10 volts across it. And that's exactly what it does. Now, let's say we want a particular voltage from a voltage divider, but we don't necessarily know what resistors we should use. There is also a simple equation for this as well. In this case, I'm going to try and work out how to get 5 volts across resistor 2. The equation goes like this: resistor 2 is equal to resistor 1 times V out, or my desired voltage out, divided by the sum of voltage in minus my desired voltage out. To give you a better understanding, let's work this out together. So again, I have 2 resistors in the circuit. Resistor 1 is set to 10 ohms, and we now need to work out the resistance of resistor 2
in order to get 5 volts dropped across it. The equation goes like so. The resistance of resistor 2 will be equal to 10 ohms times 5 volts divided by the sum of the voltage in, which is 12 volts, minus my desired voltage out, which is 5 volts, which gives us an answer of 7.14. But to keep things simple, I'm just going to set resistor 2 to 7 ohms. So resistor 2 is now set to 7 ohms. Let's check to see if I have approximately 5 volts across this resistor. And there you have it. So you can see I have 4.94 volts across this resistor, and this is because I set it to 7 ohms instead of 7.14, because in the real world it's difficult to come across a resistor of that accuracy. If I were to change the resistance of resistor 1, I would then need to use the same equation to work out what resistor 2 should be to get my desired voltage dropped across it. Okay, so thank you for watching this video. ओके आपने देखा कितनी प्यारी प्यारी वीडियोस जो हैं उसमें हैं. तो आई एम गोइंग टू encourage you people to do like that whenever you study a topic and then go to Google this just a 5 minutes or 4 minutes video, and that has clarified things very well, how you can adjust the resistance to get a desired voltage. Thank you very much. अल्लाह आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे. हमें दुआओं में याद रखो. Share this knowledge among people as a सदका है जारिया. मैं सिर्फ दुआओं का मुतमन्नी हूँ कि मुझे दुआएं दिया करें. Thank you very much.